जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, हिंदी धोरण 9 गई काले अपने लेक्चर में जोयुं। नेक्स्ट लेक्चर में पाठ 2 न्यायमंत्री अपने न्यायमंत्री अंदर जोयुं कि कई रीते सम्राट अशोक वेश पलटो करीने पोताना राज्यनी अंदर निकळे छे। ब्राह्मण देवता शिशुपालनी घरे जाय छे अने शिशुपाल हारे ए समयनी जे राज्य व्यवस्था विषे वात थाय छे अने त्यारबाद शिशुपालने पोताना दरबारनी अंदर बोलाववामां आवे छे अने कई रीते एने न्यायमंत्री बनाववामां आवे छे। हवे अत्यार सुधीनी जे स्टोरी हती एमां शिशुपाल जे छे एने न्यायमंत्री बनाववामां आवेला छे। हवे शिशुपाल न्यायमंत्री बनी जाय छे त्यार पछी केवी केवी परिस्थिति ऊभी थाय छे ए आपणे हवे जोईए। जो अब शिशुपाल न्यायमंत्री थे। सम्राट अशोके शिशुपालने पोतानी जे राजमुद्रा पहेरावी અને ન્યાયમંત્રી બનાવી દીધા। હવે शिशुपाल જે છે એ પોતે न्यायमंत्री હતા। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित समुचित मतलब सुदृढ़। शिशुपाल न्यायमंत्री बन्या बराबर है। पछी एणे जे राज्य जे छे राज्यनी सारी व्यवस्था करवानुं चालू करी दीधुं। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। एनी जे सुप्रबंध એટલે સુવ્યવસ્થા હતી એનાથી આ રાજ્યની અંદર પૂરેપૂરી રીતે શાંતિ રહેવા લાગી। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। कोई पण व्यक्तिने कोई जातनो डर नहोतो। इवन लोग पोताना घरना दरवाजा पण खुला राखीने जता रहता था। चारों तरफ न्यायमंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारे बाजू जे छे न्यायमंत्री जे छे एनो सुप्रबंध सारी व्यवस्था अने एनो जे न्याय जे छे एनी धूम मच गई। धूम मच गई एटले शुं थाय छे? मुहावरे जे छे धूम मच गई एनो मतलब थाय छे प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हो जाना। न्यायमंत्री जे सारी व्यवस्था करेली हती एना कारणे आखा राज्यनी अंदर लोकोने कोई जातनो डर नहोतो। पोताना घરના दरवाजा पण खुला छोड़ीने जता रहता हता अने न्यायमंत्रीनो जे न्याय हतो आ न्यायनी आखा राज्यनी अंदर सुप्रसिद्ध थई गयो। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। जो 1 महीना पछी रात्रिना समये कोई के पहरेदार एटले के जे चौकीदार होय छे आ चौकीदारनी कोई के हत्या करी दीधी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सवार थयो એટલે આ વાત જે છે ચારો તરફ ફેલાઈ ગઈ કે કોઈ કે જે છે ચોકીદારની હત્યા કરેલી છે। लोग बड़े हैरान थे। હવે લોકો જે છે એ ખૂબ જ ડરેલા હતા, हैरान એટલે કે ડરેલા હતા। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई અને જે न्यायमंत्री હતા शिशुपाल एनी तो नींदर ज उड़ी गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाले खावा पीवानुं छोड़ीने अने जे अपराधी जे छे एनी शोधमां पोते रात दिवस एक करी दीधा। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जो घणा बधा प्रयत्नों कर्या पछी ज्यारे अपराधी जे छे आ अपराधीनी ओळख थई त्यारे एने आश्चर्यनो पार न छे। केम? जो स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। आश्चर्य એટલા માટે થયું કે सम्राट खुदे જે पहरेदार હતો, જે चौकीदार હતો એની हत्या કરી હતી। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। હવે રાજા છે એને ગુનેગાર સાબિત કરો એ તો બહુ અઘરું કામ છે। शिशुपाल करे भी तो क्या करे? एक ओर वे न्यायमंत्री थे और दूसरी ओर वे सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रहता। હવે જો शिशुपाल करे तो શું કરે? હવે આપણે જે છે આપણા કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી જે છે એણે કોઈ જાતનું કરપ્શન કરેલું હોય અથવા તો કોઈ જાતનું એને ભ્રષ્ટાચાર કરેલું હોય, આપણે એની અંડરમાં કામ કરતા હોય તો હવે આપણે એને આપણે સજા કઈ રીતે કરી શકીએ? કારણ કે એ તો આપણા ઉચ્ચ અધિકારી છે। शिशुपाल આ જ દ્વિધામાં પડી ગયા। હવે કરવું તો શું કરવું? એક કોરે જે છે ન્યાયમંત્રી હતા અને બીજી બાજુએ सम्राटના સેવક હતા। પણ शिशुपाले શું કીધું કે न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्यायनी दृष्टिमां सम्राटे ए छे अने साधारण व्यक्ति ए छे। न्याय बधा माटे सरखो होवो जोईए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। बीजा दिवसे जे छे शिशुपाल दरबारनी अंदर गया। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे।
सम्राट अशोक जे छे ये पोताना सिंहासन पर बैठा था। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चल गया? जेवा शिशुपाल गया એટલે સીધું सम्राट अशोके पूछ्યું કે अपराधी जे छे એની ઓળખ થઈ ગઈ? આજે હત્યા કોણે કરી? न्यायमंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। न्यायमंत्री जे छे एने साहस से हिम्मत थी कीधुं कि हाँ एनी ओळख थई गई। तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोके शुं कीधुं, जो तमने एनी ओळख थई गई तो एने अहींया रजू करो। न्यायमंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। जो न्यायमंत्री जे छे ए थोड़ा समय माटे ऊभा रह्या, पछी एना उच्च अधिकारी हता धनवीर नामनो व्यक्ति, एने आज्ञा करी के धनवीर आ व्यक्तिने गिरफ्तार करो, એટલે કે એને તમે પકડી લ્યો। संकेत सम्राट की ओर था। जो हवे एनो इशारो केना तरफ હતો? महाराज सम्राट तरफ। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता એટલે एकदम शांति छवाई गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया અને सम्राट જે છે એનો ચહેરો પણ ક્રોધથી एकदम लाल થઈ ગયો। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? जो ये तो राजा હતા, બરાબર છે। અને ન્યાયમંત્રીએ એને ઇશારો કર્યો અને જે ખાસ સેવકને કે રાજાને गिरफ्तार કરી લ્યો। એટલે રાજા એકદમ ક્રોધિત થઈ ગયા અને પોતાના સિંહાસન ઉપરથી ઊભા થઈ અને એને રાડ દેખી, તારી આટલી હિંમત? न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। जे न्यायमंत्री जे छे एने एवो भाव प्रकट कर्यो कि एने कई सांभळ्युं ज न होय। सम्राट अशोके एने खीजाणा, बराबर छे, कि तारी आटली हिम्मत छतांय न्यायमंत्रीए कई न सांभळ्युं होय एवो एने भाव प्रकट कर्यो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्यायमंत्रीए पाछुं कीधुं कि धनवीर, तू जोवे छे शुं? आ जे अपराधी छे एने तू गिरफ्तार कर। दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ी અને એ જ क्षणे सम्राट अशोक जे छे एना हाथनी अंदर हथकड़ी पहेरवामां आवी। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। जो न्यायमंत्री जे छे एणे शुं कीधुं કે सम्राट अशोक, तारा पर आ जे पहरेदार छे, चौकीदार, एनी हत्यानो आरोप लगाववामां आवे छे, तू आनो शुं जवाब आपीश? जो आनी अंदर शब्द आवेलो छे, मुहावरे आवेलो छे, होठ काट कर गए। होठ काटना એટલે કે આશ્ચર્ય में पड़ना। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। सम्राट જ્યારે ન્યાયમંત્રીએ ઇશારો કર્યો અને सम्राटને કીધું કે તમારા ઉપર જે છે આ પહેરેદાર ચોકીદાર છે એનો હત્યાનો આરોપ છે, તો તમે એનો શું જવાબ આપશો? એટલે सम्राट अशोक જે છે एकदम आश्चर्यમાં પડી ગયા। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? न्यायमंत्रीએ પાછું પૂછ્યું, તો તમે તમારો ગુનો સ્વીકારો છો? हाँ, मैंने उसे मारा सो अवश्य है, परंतु उद्वंद था। उद्वंद એટલે अविवेकी। जो उद्वंद એટલે अविवेकी। सम्राट अशोके शुं कीधुं प्रत्युत्तरमां, हाँ, मैंने मार्यो चोक्कस है, परंतु ये माणस अविवेकी हतो। सम्राट का उत्तर था, आओ सम्राटे एने उत्तर आप्यो। वह उद्वंद था या नहीं? तुमने उस राजकर्मचारी की हत्या की है। जो शिशुपाले शुं कीधुं, ये अविवेकी हतो के नहोतो, बराबर छे, परंतु तमे एक राजकर्मचारीनी हत्या करेली छे। तुम अपराधी हो अने तमे अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्यायमंत्री ने निर्णय दिया। न्यायमंत्रीए शुं निर्णय आप्यो कि सम्राट अशोक, તમે એની હત્યા કરેલી છે, બરાબર છે, એ અવિવેકી હતો કે નહોતો, પરંતુ એક રાજકર્મચારી હતો અને તમને એની હત્યા બદલ મૃત્યુદંડ આપવામાં આવે છે। સભામાં સન્નાટા છા ગયા। જો સભાની અંદર એકદમ સન્નાટો છવાઈ ગયો, એકદમ શાંતિ છવાઈ ગઈ। ન્યાયમંત્રી का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुकाવ્યા। ન્યાયમંત્રીએ જે આ નિર્ણય આપ્યો, બરાબર છે, કે તમને મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવે છે, એટલે सम्राटे પોતાનું સિર ઝુકાવ્યા। मुहावरे से सिर झुकाना એટલે કે लज्जित होना।
શીર ઝુકાના એટલે કે લજ્જિત થઈ ગયા. ન્યાયમંત્રીએ જે સજા ફરમાવી એના કારણે સમ્રાટ અશોક જે છે પોતે લજ્જિત થઈ ગયા. वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे. जो राजा सम्राट જે છે એ તો ખુદ शिशुपालની જે परीक्षा करता था પોતે એની અંદર સફળ થઈ ગયા હતા. सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था. જો સમ્રાટનું હૃદય જે છે એ આવા વ્યક્તિને મેળવીને એકદમ ગદગદ, કારણ કે સમ્રાટ અશોક જે છે એની પરીક્ષા લેવા માંગતા હતા એટલે એણે એક જે છે રાજકર્મચારી એની હત્યા કરેલી હતી અને શિશુપાલ જેવા વ્યક્તિ જે છે ન્યાયમંત્રીને મેળવી અને સમ્રાટ અશોક જે છે એનું હૃદય ગદગદ થઈ ગયું. ગદગદ હોના એ પણ એક મુહાવરે છે, તેનો મતલબ શું થાય છે? ભાવ વિભોર હોય છે ના. ગદ હોના મતલબ થાય છે ભાવ વિભોર હોના. ગદગદ હોના એટલે કે ભાવ વિભોર થઈ જવાનું. સમ્રાટ અશોક જે છે એ શિશુપાલની પરીક્ષા લેવા માંગતા હતા અને એણે જે પરીક્ષા લીધી એના કારણે જે પરીક્ષાની અંદર શિશુપાલ સફળ થઈ ગયા એટલે સમ્રાટ અશોક એકદમ ગદગદ થઈ ગયા એટલે કે ભાવ વિભોર થઈ ગયા. तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया. जो ત્યારે જે ન્યાયમંત્રી જે છે એણે ઈશારો કર્યો એનાથી એક કર્મચારી જે છે એ સમ્રાટ અશોકની સોનાની મૂર્તિ લઈને ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ ગયો. न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है. હવે જો ન્યાયમંત્રીએ જે છે આખી સભાને સંબોધતા કીધું કે સજ્જનો, આ સાચું છે કે હું ન્યાયમંત્રી છું અને એ પણ સાચું છે કે અપરાધીને સજા થવી જોઈએ, પરંતુ અપરાધી માણસ જે છે એ બીજો કોઈ નહીં, सम्राट अशोक પોતે છે. शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए इसे ईश्वर ही दंड दे सकता है. जो આ ન્યાયમંત્રી છે એણે શું કીધું કે આપણે જે શાસ્ત્રો છે શાસ્ત્રોની અંદર રાજાને ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, એટલે આ જે ન્યાયમંત્રી છે सम्राट अशोक જે છે એને સજા ભગવાન જ આપી શકે. अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले. એટલા માટે હું આજ્ઞા આપું છું કે સમ્રાટ અશોક જે છે એને છોડી દેવામાં આવે અને સમ્રાટ અશોકની જગ્યાએ એની જે સોનાની મૂર્તિ જે છે આ સોનાની મૂર્તિને ફાંસી પર લટકાવવામાં આવે, જેથી કરીને લોકોને शिक्षा મળે. ન્યાયમંત્રી કા ન્યાય સુનકર લોક જય જયકાર કરી ઉઠે. જો ન્યાયમંત્રીએ જે ન્યાય કર્યો હતો આ સાંભળી અને લોકો જે છે એકદમ એનો જય જયકાર કરવા લાગ્યા. जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा आप वापस ले लें, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा. जो જ્યારે બધા લોકો સભામાંથી જતા રહ્યા ત્યારે શિશુપાલે જે છે રાજાએ એને જે રાજમુદ્રા પહેરાવી હતી એ રાજમુદ્રા પાછી એને આપી અને શું કીધું કે મહારાજ, આ જે રાજમુદ્રા છે એ હવે તમે પાછી લ્યો, મારાથી આ જે બોझ છે એ નહીં ઉપડે. अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा. जो अशोके जे छे सम्मान भरी दृष्टिए जे હવે તો કારણ કે અશોક જે છે એની પરીક્ષામાં સફળ થઈ ગયા હતા, એણે જે પરીક્ષા લીધેલી હતી આ શિશુપાલની એની અંદર પૂરી રીતે સફળ થઈ ગયા હતા, એટલે હવે એકદમ એનાથી ગદગદ થઈ ગયા હતા. ગદગદ એને કે ભાવ વિભોર હોના, ભાવ વિભોર થઈ અને એણે શું કીધું, આપની મેરી આંખે ખોલ દી છે, તમે જે છે એ મારી આંખો ખોલી દીધી. આ પણ એક મુહાવરે છે, આંખે ખોલી દીધા એટલે કે સહી પરિસ્થિતિ સમજાના, જે પરિસ્થિતિ છે એ તમે મને સમજાવી દીધી છે. આપકા સાહસ પ્રશંસનીય છે, તમે જે આ સાહસ કરેલું જે છે એ એકદમ વખાણવા લાયક છે. પ્રશંસનીય એટલે કે વખાણવા લાયક છે. यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता. આ જે બોझ છે એ તમારા સિવાય બીજો કોઈ માણસ ઉપાડી શકશે નહીં. ન્યાયમંત્રી નિરુત્તર હો ગઈ. નિરુત્તર हो जाना એટલે કે એકદમ શાંત થઈ ગયા, એનો કોઈ ઉત્તર આપી શક્યા નહીં. આજે એને સવાલ કર્યો એનાથી ન્યાયમંત્રી જે છે એ નિરુત્તર થઈ ગયા, કંઈ બોલી શક્યા નહીં. જો હવે આપણે જોઈએ આની અંદરથી થોડાક પ્રશ્નો નીકળે છે, એ આપણે થોડાક પ્રશ્નો સમજી લઈએ. જો એમાં शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? આપણે જોયું પહેલાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, બરાબર છે કે શિશુપાલે જે છે પોતાનો ઘરનો દરવાજો કેમ ખોલ્યો? કારણ કે રાત્રિના સમયની અંદર
रात के समय जब एक परदेसी आया, उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि मैं परदेसी हूँ और मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा, ऐसा सवाल किया और शिशुपाल ने अपना घर का दरवाज़ा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? બંને વચ્ચે જ્યારે રાત્રિના સમયે વાત થતી હતી, બરાબર છે, ત્યાં શિશુપાલે શું કીધું હતું? શિશુપાલ किस अवसर की तलाश में था? तो कि शिशुपाल જે છે वो न्याय मंत्री बनने की अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्यायની બાબતમાં શિશુપાલના શું વિચાર હતા? न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार थे कि न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है। न्याय की दृष्टि में राजा और सामान्य प्रजा सभी एक समान होते हैं। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? આપણો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે પરદેશી કોણ હતો અને એણે બીજા દિવસે શું કર્યું? આપણે જોયું ને कि परदेसी सम्राट अशोक स्वयं था और उसने दूसरे दिन शिशुपाल को अपने राज दरबार में बुलाया। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक के शिशुपाल ने राजमुद्रा क्यों आपी? चुप। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित किया, शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया और उसने शिशुपाल को राजमुद्रा दी। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई? शिशुपाल जे छे એ न्याय मंत्री बनी गया, પછી રાજ્યની અંદર કેવી કેવી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ? આપણે જોયું कि जब शिशुपाल न्याय मंत्री बने तो राज्य में उसने समुचित व्यवस्था आरंभ कर दी और लोगों को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। આગળનો પ્રશ્ન જુઓ। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी होगी? जो चौकीदार है एनी हत्या थी गई એટલે शिशुपाल की परिस्थिति केवी થઈ गई थी? पहरेदार की हत्या हुई तो शिशुपाल उसको जो अपराधी है वो अपराधी की तलाश में लग गया। उसने रात दिन एक कर दिया और खाना पीना भी छोड़ दिया था। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? नेक्स्ट प्रश्न है कि જ્યારે अपराधी જે છે એની જાણ થઈ ત્યારે शिशुपाले શું કર્યું? जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल ने अपराधी को घोषित कर दिया। राजा जो सम्राट है उसे अपराधी घोषित कर दिया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई।